हार्दिक शुभकामना है, आपका साल अच्छा हो, आपका त्यौहार अच्छे से मनाइए। और चलिए शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट समथिंग अबाउट होम्योपैथी। Of late, you must be seeing that there are a lot of cases of fever coming in our day-to-day practice, especially a lot of cases of chikungunya, where we had the typical symptoms of pain and fever and typical Jupiter of symptoms. Of course, one of the very interesting and very important remedies. Of late, कुछ दिनों से ऐसे कुछ केसेस मेरे पास फीवर के आ रहे हैं जिसके अंदर बड़े अलग अलग सिम्टम्स आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप देखेंगे, मैंने आपके पहले भी आपको बोला था एक यूट्यूब लाइव के अंदर के एक पेशेंट मेरे पास आया था जिसको फीवर था और मॉर्निंग में आया था। उसने बोला था रात को मैं एक बस शादी में गया था एंड वहाँ से फीवर आ गया मुझे। सो आई थॉट मे बी ही मस्ट हैव ईटन आउटसाइड फूड एंड ऑल एक्सवाइजेड। नथिंग वर्कड फॉर 2 days. He had to take crocin, but on the 3rd day it came to know that I took the rubric fever from noise because there was loud music, barging music going on, and the patient was better with the help of bryonia. So let us go forward today and see something. A very interesting case came to me of fever. Welcome, Dr. Bharti, Dr. Bharat. A very interesting case of fever came to me, and the patient said that again he had gone out to eat and after that he had pain. Now of course whenever जब भी हमको पता पड़ता है पेशेंट बाहर खाने को गया तो उसको पेट में तकलीफ हो रही तो रेमेडी हो सकता है पल्सेटिल, हम सभी सोचते हैं। बट ये केस के अंदर भी जब पेशेंट मेरे पास आया तो मैंने सोचा चलो पल्सेटिला है, बट पेशेंट बोला जब से मेरे पेट दुखना शुरू हुआ है तब से मुझे बुखार आया। सुनिए क्या बोल रहा है पेशेंट, जब से मेरा पेट दुखना शुरू हुआ है तब से मुझे बुखार आया है। ऑफ कोर्स पल्सिला डिड नॉट वर्क एंड देन आई प्रिस्क्राइब्ड अ वेरी infrequently used medicine. In fact, I have also used that medicine very infrequently, and that is सिकल कॉर। मैंने पेशेंट को दिया सिकल कॉर 200, एक डोज आधे कप पानी में डाल के एक एक चम्मच पानी 2-2 घंटे में। मैंने बोला आप नेक्स्ट डे आके दिखाइए, एंड नेक्स्ट डे द पेशेंट वाज मच बेटर। द सिम्टम फॉर प्रिस्क्रिप्शन, कौन सा प्रिस्क्रिप्शन का सिम्टम? दैट इज फीवर फ्रॉम पेन इन द स्टमक। प्रदीप, फीवर फ्रॉम पेन इन द स्टमक। तो ये जो पेन रहता है उसके आजू बाजू जो फीवर रहता है उसके मैं आपको कुछ सिम्टम और रेमेडीज को बताऊंगा। जैसे कि पेशेंट बोलता है कि मैं कल गिर गया, मेरे पैर में थोड़ी चोट आई है और उसके बाद मुझे फीवर शुरू हो गया। पेशेंट क्या बोलता है कि मेरे को कल चोट लग गई और उसके बाद मुझे फीवर आना शुरू हो गया। सो हम क्या सोच सकते हैं उसके लिए? फीवर फ्रॉम पेन, हम सभी लोग सोच सकते हैं आर्निका मोंटाना, बट आर्निका का सिम्टम ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये रेमेडी मैंने उसको दिया था आर्सेनिक एल्बम। अगर आप रेपेटरी खोल के देखेंगे उसमें लिखा है पेन फ्रॉम फीवर, आर्सेनिक एल्बम, अगेन सिकल कॉर एंड अगेन द पेशेंट यू कैन ऑल्सो गिव कार्बोवेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। ओके, सो सॉरी, गुड आफ्टरनून डॉक्टर साई, डॉक्टर खत्री, डॉक्टर सर जेल्सीमियम का कल कोई यूनिक सिम्टम बताता हूँ मैं आपको, जस्ट मैं कंप्लीट कर दूँ पहले। दूसरा सिम्टम है, अगर पेशेंट को फीवर है और बोलता मुझे फीवर के साथ में हाथ पैर भी बहुत दुख रहे हैं, मुझे घुटने दुख रहे हैं, पैर दुख रहे हैं, तो आप एक 2 दवाई बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको सोचना है, पहले है ब्रायोनिया अल्बा एंड सेकेंड इज रेस्टॉक्स, जो आपने बहुत ज़्यादा यूज़ किया होगा अपने प्रैक्टिस में पेन विथ फीवर। बट पेशेंट पेन विथ फीवर विथ चिल्स, उसके अंदर हिपोटोरियम पर्फ बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। तो ये आपको समझ में आ गया, पेन फ्रॉम फीवर, पेन विथ फीवर और पेन इन द स्टमक बिकॉज ऑफ दैट पेशेंट को फीवर आता है। ओके, ये आपको समझ में आ गया तो हम आगे चल सकते हैं। और ऑफ कोर्स रेमेडी जेल्सीमियम मैं आपको बता सकता हूँ, बट ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं? बहुत सारे इंक्वायरीज मेरे पास आई थी व्हाट्सएप पे, बहुत इंक्वायरीज आई थी मेरे व्हाट्सएप पे कि भाई इसके बारे में कुछ बताइए।
सो आपको ये शायद समझ में आ गया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, एनीबडी समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं हम। अभी देखते हैं हम जेल्सीमियम। जेल्सीमियम के अंदर हम क्या सोच सकते हैं। सबसे पहले जब भी आप जेल्सीमियम प्रिस्क्राइब करते हैं तो जेल्सीमियम में बहुत इंपॉर्टेंट है दैट फीवर इज ग्रेजुअल, मतलब फीवर थोड़ा ग्रेजुअली आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, अभी जेल्सीमियम में आपने देखा होगा कि फीवर के अंदर क्या रहता है कि पेशेंट हमेशा बोलता है कि मुझे आंखों में तकलीफ होती है। नाउ heaviness of the eyes, heaviness of the eyes is a very very important symptom of gelsemium, जो मुझे I have got in lots and lots of cases of gelsemium. अभी how will the patient describe the heaviness? The patient of gelsemium lot of time will say that I feel the eyes are very tired, I just want to go and sleep. The eyes are very tired, I just want to go and sleep. This is one more symptom of gelsemium which is very very important. थर्ड सिम्टम ऑफ जेल्सीमियम, ये सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। देर इज चिलीनेस अप एंड डाउन द बैक, देर इज चिलीनेस अप एंड डाउन द बैक, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ जेल्सीमियम। वन सिम्टम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यॉर्निंग। द पेशेंट कैन नॉट गेट फुल्ली टू स्लीप, पूरा सो नहीं सकता है, मतलब आधा रहता है, आधा सोते रहता है और आधा जागा हुआ रहता है। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ जेल्सीमियम। बाकी सिम्टम आप देखिए, दे पेशेंट को रहता है स्लो ऑनसेट ऑफ फीवर ऑन द थर्ड डे, हैवीनेस इन द बॉडी, पेन इन द बॉडी, ये सब सिम्टम जेल्सीमियम में। बट ये 3-4 सिम्टम मुझे बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम जेल्सीमियम मिले जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ऑफ कोर्स इफ यू सी जेल्सीमियम इन एलन्स की नोट, अगर आप जेल्सीमियम देखेंगे एलन्स की नोट के अंदर, इट इज रिटन डिजायर्स टू बी क्वाइट, टू बी अलोन, डज नॉट विश टू स्पीक or have anyone near her or near him. Even if the patient is silent, even if the person is silent, means he does not want anybody around him. Even if the person who is around him is silent, he does not want that person. That is a symptom of जेल्सीमियम. I hope आपको ये समझ में आ गया डॉक्टर खत्री। हम आगे बढ़ते हैं। Sir, 26-year-old male unable to concentrate and focus on study with lack of memory, kindly remedy बताइए। ओके डॉक्टर बाबल, हेलो, आफ्टर आई थिंक अ लॉन्ग टाइम। यस, आयोडम और आयोडियम सेम रेमेडी है। सो 26-year-old मेल अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस ऑन स्टडी विथ लैक ऑफ मेमोरी। सी डॉक्टर साहब, डॉक्टर भट्टाचार्य, जब भी आपके पास कोई मेमोरी का पेशेंट आता है ना कि मेमोरी नहीं हो पा रही है और कोई तकलीफ हो रही है, ये देखिए कि why is the patient suffering from weakness of memory? This is very very important. Why the patient is not able to concentrate? See, there are a lot of causes. Maybe a lot of stress, lot of cares, lot of worries, lot of anxiety, lot of anticipation. There are a lot of things which you can think about. या बहुत सोच सकते हैं in case of memory loss. अभी आप देखेंगे, I'll just give an example. Patient tells me कि since 6 months I am studying for the NEET exam. Now I am so tired now. Whenever I try to exert myself, I cannot remember anything. There's a very beautiful rubric in there. एक rubric अच्छा रेपिटरी में है, memory, you can say memory loss of, or you can say weakness of memory from mental exertion. वीकनेस ऑफ मेमोरी फ्रॉम मेंटल एक्सर्शन। एग्जाम्पल देता हूं पहले मैं। सबसे फर्स्ट ड्रग नक्सवामिका, सेकेंड ड्रग सल्फर, थर्ड ड्रग नाइट्रोम्यूर और फोर्थ ड्रग कैल्केरिया। ये बहुत इंटरेस्टिंग रेमेडीज है। अभी आपने बोला जैसे वीकनेस ऑफ मेमोरी फ्रॉम एंजाइटी एंड इरिटेशन। नाउ अभी पेशेंट को बहुत एंजाइटी है, पेशेंट को बहुत इरिटेशन है, पेशेंट बहुत घबराहट हो रही है, मैं क्या करूं, मेरा कैसा होगा। सो आप कैसा कर सकते हैं। सो इसके अंदर देखिए कि किस, मतलब एंजाइटी एक प्रकार का टेम्परामेंट है जो हर एक आदमी के अंदर रहता है। इतनी ज्यादा एंजाइटी कि उसको मेमोरी लॉस होना है तो उसके अंदर ड्रग्स चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, यू कैन थिंक ऑफ अर्जेंटम नाइट्रिकम, यू कैन थिंक ऑफ आर्सेनिक एल्बम, यू कैन थिंक ऑफ कालीफॉस, यू कैन थिंक ऑफ फॉस्फोरिक एसिड ऑल्सो। So these are the symptoms that you should think about when there is memory loss. Of course, there are lot of remedies, डॉक्टर साहब, बट ये थोड़ा अगर देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको इसमें रेमेडी मिल जाएगी
किसी ब्रांड की बोतल में आयोडम लिखा है, ऐसी बेसिकली आयोडम और आयोडीन इफ जेनेरिक नेम है, अलग अलग नामों के ये है। और तो आप ये रेमेडी, जैसे फॉर एग्जांपल आयोडम और आयोडीन, ये एक ही दवाई जो आयोडीन से बनती है, आप यूज कर सकते हैं, उसको एक ही है। डू यू सी मोर वीक मेमोरी इन लास्ट टाइम इन यंग पीपल? यस, a very good question, a very interesting question. In this world of social media, where you have lot of virtual friends but no actual friends, the mind is totally engrossed in these type of activities, what people are doing, how many likes I have. You are never off that. That means there is no unwinding of mind in this situation. When there is so much social media, people are following people for no reason. Sometimes they follow for sometimes and they feel I am following a person who, and I am not getting what I want, then they start following other person. So they are not using their own head, they are using somebody else's head. That's a problem. That's why we see a lot of kids, lot of people having more weakness of memory than what we had in our past. A very interesting question. So in these cases you have to think something differently in order to arrive to a simillimum. Very nice question. Sir, very upset as not getting relief from severe running nose, watery together, much sneezing in start with irritation with little age 48. Have to forcefully take allopathy, anti-allergic medicine. See, if you are not getting a relief, that means the disease which you are carrying or the symptoms which you are carrying requires a thorough and in-depth case taking, डॉक्टर साहब. अगर आपने इन डेप्थ केस टेकिंग किया तो ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट मिल जाएगा. जो मैं आपको यहाँ बताता हूँ, जो भी सिम्टम्स आप मुझे बताते उसके हिसाब से इफ आई टेल द रेमेडी, दैट स्नीजिंग रेमेडी, रनिंग नोज, क्रॉनिक प्रॉब्लम, यू कैन थिंक अबाउट ब्रायोनिया और सबरडिला और sanguinaria or rust tox or arsenic, cubitum perforatum, noxomica. Now all these remedies basically are constitutions. So if this constitution patients comes to you, automatically this remedy would work in that patient. In your case, if you are not getting relief, you have to take a detailed case taking. अब detailed case taking करिए और उसके बाद आपको रेमेडी निकलेंगे तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे. ओके. Recurrent pimples on face, dark rings under eyes, lot of blackheads on nose, skin of face looks dull and not appearing to be clean. See, when you have a case of what you call eruptions, and there are a lot of eruptions on the face, blackishness of skin. Now, as I always tell you, it is very important to define the symptom. Like for instance, if you are treating a case where the face has problem because there is oily face, or the face basically the skin is very dry, or the patient is drinking less amount of water, or the patient is not eating a balanced diet, or the patient, there are a lot of other cause, the patient is doing late nights and sleeping late in the morning. This everything has toll in your face, on the skin we say. ये केसेस के अंदर 2-3 रेमेडीज आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट मेरे पास आया था, वो ही टोल्ड मी कि मेरा पेट हमेशा खराब रहता है. जब मेरा पेट हमेशा खराब रहता है तो मेरे को पिंपल्स आ जाते हैं. अभी आप देखेंगे पेट खराब होने की वजह से पिंपल्स, 2-3 रेमेडी बहुत इंपॉर्टेंट है. नक्सोमिका, कार्बोवेज, एंटीम क्रूड. ओके. नाउ हमारे पेशेंट्स आते हैं, जो मेरे पास पेशेंट आया था एक बार, डॉक्टर साहब मैंने सब ट्रीटमेंट कर लिया, आई हैव टेकन ऑल द ट्रीटमेंट, आई हैव टेकन एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, अप्लाइड लॉट ऑफ क्रीम्स एंड नो रिजल्ट. ये केस, इन दिस केस I thought that this case has so many symptoms not because of the constitution, but because of applying a lot of other treatment. I just started the case with Boista because I took the symptom eruptions from overuse of cosmetic. Believe me, Boista helped the case so much. The patient is much better now. See, this is importance of case taking. Sir, skin is like dry, patient has weak digestion. So now you have got the case. So I have told you something about gastric discernment, carboage, naxomica, antim crude,
Lycopodium you can think about, pulsatilla you can think about. One more remedy that is very, very important, you must think, I have used it in my practice, and that is Robinia, from gastric derangement and when the skin is dry. So you can think these remedies, add to it some other symptoms so that you don't fail in your prescription. Okay. Sir, father age 80 years, bedridden. His digestion is very weak. He goes to motion every 3-4 hours. 5 to 6 times motion is a bit loose. Sir, kindly tell some medicine to be taken emergency. So stop. Sir, emergency you can take, if you're taking a lot of anti, you can take agraphis nut. Is an interesting remedy. Sabadilla and arsenic. Your father is suffering actually for, there's a condition called as atrophic gastritis. When the stomach becomes very weak because of old age, is not able to digest food properly. In these cases, if you do that, you must do a stool test in order to understand whether the patient is suffering from malnutrition or high H. pylori infection. I had a case of 86 years old male patient having the same problem. Food could not be digested and had to go for stools 8 to 10 times in a day. Because of that, he was malnourished and he had fluid problem. So he had to put a lot of fluids, saline and all. So in this case, what we did, I gave a remedy, a specific remedy, H. pylori, 30 potency, 2 times a day for 5 days. Waited for 15 days, again repeated the same dose, H. pylori, 32 times a day for 5 days. He is much better now. He goes for stools only 2 or 3 times in a day and no saline, because the water loss is less, and is very happy with that. So there is a state called atrophic gastritis. In these cases, you have to think a specific remedy which I gave to this patient. In this case, you can also think about remedy vitamin B12. This also works. You can give some enzyme preparation to the patient. You can give some probiotics. You at some cases require sporolac, that is lactobacillus also. So depending on the case, depending on your father's symptom, you can think about these cases and you can get good results. Severe headache only during stools. Oh God. So very, very interesting case. I have had cases where I had a case where the patient had headache because he had to press lot during stools, or you can say because of constipation, or he had to press because he has to strain during stools, and because of that he used to have headache. Simple 2-3 remedies which I use in my practice. First is Naxomica, second is Bryonia, third is Pulsatilla, fourth is sulfur. You can think one of these remedies when you identify some symptoms in relation to these remedies. Yes. So in this case, antibiotics के वजह से तकलीफ हो गई नितिन. In this case, you can give Naxomic and LM potency and then use the remedies which I have told you to use. Okay, sir. Thank you so much. One last query. Around 25-26 years, male having phimosis since birth, also has hypersensitive glands. When excited, it is painful to more the foreskin to back. Yeah, in this case, I have used a few medicines. First of all, I tell the patient to calendula external application mother tincture in water and try to clear up the skin and try to do dressing, and that foreskin exercise. Some of the patient respond very well with treatment. Okay. Also tell some assessment to be taken in stop severe. I have told you agraphis nut, you can take Sabadella or arsenic album. I have got good results with agraphis nut and arsenic, depend on case to case. Okay. So I hope English and Hindi both are okay. Everybody can understand what I'm speaking. Although few doctors who are out of India might find it difficult to understand Hindi, but most of the crowd is of Hindi speaking. I hope you understand what I'm speaking, because I don't know exactly whether आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, because कुछ मुझे मिल नहीं रहा है, thumbs up वगैरह मुझे समझ में नहीं आता है. Yes, apart from calendula, I have used few medicines. That is, first is thiocyanamine in LM potency मैं use किया हूँ.
जिससे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मैंने बेलिस पर भी यूज़ किया हूँ जिससे मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और एक मदर टिंचर और मैंने यूज़ किया हूँ अपार्ट, अगर कैलेंडुला काम नहीं किया, दैट इज इचनीशिया एंग्यूस्टिफोलिया मदर टिंचर, पानी में मिला के, उससे भी मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले। English is good, yeah. So there are these medicines which I have used in my practice with good results. Simple exercise, taking the foreskin, that is also very important, and that could also give you good results. Okay, so let us move forward again. I hope you understood something about stools, because headache because of pressing in stool is also important. One thing also very important, I recall a case where he had a typical symptom उसको मिला था कि the patient had a headache after stools. Very surprising. When the patient has passed stools, very nice stools, and he's very happy with the stools, but after that, the patient had headache. Very surprising. And that in that case, I had given a fantastic remedy, that worked very well, and that was carbon sulf. Carbon sulf. Carbon sulf cured the case. So sometimes it happens also, some other remedies also work very nicely, and carbon sulf cured the case. Let us move. There is some work going on outside my clinic, so there might be some disturbance. Theosinomen Ichnesia angustifolia local application. Ichnesia angustifolia local application. So you can use that also. That also. I hope you are understanding. I hope you are getting me what I want to tell you, because there is something noise going on. Okay, and Ichnesia angustifolia and theosomin. Okay. उसको बस 10 मिनट रोकने के लिए थोड़ा. Okay, sorry for the disturbance. Let us go forward. और कोई question? Yes, I hope you understood theosominum, Dr. Bhattacharya. Yeah, Dr. Babal. So I hope you got the name of the medicine. Let us go forward. So that the remedy which I was telling you, that is headache after stools. The remedy was carbon sulf. Then when I read also, there were remedies, like oxalic acid, spigelia, sepia also had are written in that rubric. But I have used carbon sulf with very good results. Foot hand mouth disease, blisters with body. Yeah, there are a lot of cases. Foot. Very nice questions. In this case, there are 2-3 remedies which I have used very, 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 very effectively in my practice. The first is arsenic. Second is calendula. Third is cantharis. These remedies rate very high because most of the cases, ज़्यादातर केसेस में ये रेमेडी से क्योर कर चुका हूँ. इसके आगे यू माइट थिंक अबाउट ग्रेफाइटिस, you can think about nitric acid, and you can think about petroleum also. But these 3 remedies, arsenic, sulfur and cantharis, have cured most of the cases in my practice of the foot and mouth disease. और ये केसेस काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, मार्केट में भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं इस सीजन में. एंड यू मस्ट रियली हेल्प द चिल्ड्रन, बिकॉज सो मेनी children come with blisters and discharge, and they stick to each other. The child are very irritable. In one case, because of that, I had prescribed belladonna also, which also cured the case because of the irritability and the violence and the anger. Okay. So let us go forward. Dr. Bhattacharya, okay, thank you. Yes, thank you. Thumbs up दिया कीजिए, so that I also know that आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. अदरवाइज मुझे लगता है पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ओके. एक अच्छी रेमेडी जो मेरे दिमाग में आई है, एक मेरे पास, आई थिंक इफ देयर आर नो अदर, कुछ क्वेश्चंस ऊपर चलेंगे स्क्रॉल करके, सो अगर आपको यू कैन ऑलवेज राइट अगेन. एक मेरे पास पेशेंट आया था जिसको फीवर था, और बहुत ही अच्छा सिम्टम था उसको. वो बोलता था कि डॉक्टर साहब, मुझे रात को पसीना लेफ्ट साइड पे आता है और सवेरे पसीना मुझे राइट साइड पे आता है, और फीवर था. तो मैंने फीवर का सिम्टम ना पूछते हुए उसको सिर्फ ये दिखा कि भाई प्रस्पिरेशन और ऑल्टरनेट साइड्स, 1-2 सिम्टम ऐड किया, नक्सोमिका दिया, विच क्योर्ड द केस. इफ यू गो इन द मैटरमेडिका, इट इज रिटन इन नक्सोमिका, प्रस्पिरेशन ऑल्टरनेट साइडेड. 3 रेमेडी बहुत इंपॉर्टेंट जो मेरे को एक्सपीरियंस है. फर्स्ट इज नक्सोमिका,
सेकेंड इज कॉस्टिकम एंड थर्ड इज सल्फर। जो मेरे को रिजल्ट मिला, मैं मेरा एक्सपीरियंस, आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, जो मुझे रिजल्ट मिला है, वन साइडेड पर्सपिरेशन, नक्सोमिका, कॉस्टिकम, सल्फर। सो लेट अस गो फॉरवर्ड। थोड़ा फास्ट फटाफट सवाल पूछे, यू नो, सो दैट आई ऑल्सो शुड नॉट गेट टाइम, बिकॉज इफ आई गेट टाइम देन आई कैन थिंक, आई वॉन्ट टू बी सो फास्ट इन मैथमेटिका सो दैट it is my revision also of mathematica. So be fast in your answering the question. Let me, if there are no questions, I just have one case, where I had a case of keloid, where the patient, okay, so which medicine at the end of which medicine to be taken at the time of severe breathlessness to replace inhaler. हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग रेमेडी डॉक्टर नितिन, और बहुत ही अच्छी काम करती है, ब्लाटा ओरिएंटलिस इन लो पोटेंसी रिपीटेशन। लो पोटेंसी नहीं है, एलएम दीजिए, रिपीटेशन में 10-10 मिनट में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। ऑफ कोर्स नथिंग कैन रिप्लेस द सिम्टमेटोलॉजी ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेथलेस एट दैट टाइम। मतलब जब द पेशेंट इज ब्रेथलेस, डज ही वांट एनीबडी इन हिम, डज ही कॉल फॉर हेल्प, or he just sits down and just relaxes and wants no help, he wants to be happy with himself, or he calls, he becomes panicky, ये सिम्टम भी जानना बहुत ज़रूरी है। बट ब्लाटा ओरिएंटलिस अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, सो ब्लाटा ओरिएंटलिस इन लो पोटेंसी इन रिपीटेशन definitely gives good results. But at that time, at the time of breathlessness, how does the patient behave? This is very, very important. Blata in LM or C6. LM would be very nice, Dr. Babel. LM potency, if you have, it works wonderfully. If you have LM potency, I will suggest you to give LM potency in repetition, because every time you give LM potency repetition, you are changing the potency of the Blata orientalis. 6C potency, of course, you can give that also, which I used to give before also, because you're giving every time 6C potency, so there is no change of potency. So the white force does not get that one step higher potency. Okay, that is also very important. So LM potency will available, very nice. If not, then you can give C potency. And Dr. Babel, the case of Hensa, I will just study and get the remedy today and tell you on the WhatsApp. Patient is irritable with headache and wants to lie down. Yeah, see, whenever there is irritability or head pain, there are lot and lots of remedies. Think of Naxomica, think of belladonna, think of sulfur, think of stramonium also. These are remedy for those type of complaints. As you move forward, wants to lie down, that's again irritability का common symptom है वो, and this is very common, and this for you cannot prescribe for that irritation, because most of the cases of migraine headaches, vascular headaches get these symptoms of irritation. Do something. How does the patient react? That is very important. Next week the other patient will come. Okay, Dr. Babel, fine. Dr. Bharati, thanks. We are still not over, Dr. Bharat. We still have 2 minutes left. Yeah, I just can see the clock. It's in front of me. One symptom which which one type of headache which I have just really want to discuss. I had an interesting case, where the patient came and told me, he was an old man. Okay, just hypopigmented patches, remedies, sir. Very, very difficult to treat. And results also vary from person to person. In my practice also, if these type of cases come, I am also a bit, anxious whether it will give results or not, no good results. Because in these type of cases, very difficult to give results. But of course, there are some remedies which fantastically give results. Just see how are the patches. Earthy complexion, dark complexion, bluish discoloration, dusky red, red discoloration. A few remedies which have given me good results, you can write down: China officinalis, China ars, sulfur, plumbum metallicum, restox. These are the remedies that come to my mind which have given me good results. Okay. Differential diagnosis, I told you, different types of patches, dusky red, earthy complexion, bluish, ये सब में आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट्स मिल जाएगा। एक जस्ट एक केस में आपको बताना चाहूंगा, फिर मैं बंद करूंगा। एन ओल्ड मैन केम टू मी विथ लॉट ऑफ कफ प्रॉब्लम,
which with itching in the occipit. I opened the rubric itching in the occipit just and matched some symptoms, and ammonium carb cured the case. Which medicine works to control repetitions of motion? नो डॉक्टर नितिन, ये डिपेंड करते हैं, जैसे आपने अगर केस लिया आपके फादर का, if he is 80 years of age, then you have to decide which to, as I told you, H. pylori, vitamin B12, arsenic album, Igil marmellose, Igil folia. These are the remedies in repetition that can cure the case, but very, very important is symptoms kya hai. Okay, so it's already half an hour up. Thank you everybody, thank you for joining, and I hope you enjoy as much as I enjoy sharing my knowledge with you. Thank you. Until next Saturday, goodbye.